हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेरी वार्म वेलकम टू निफ्टी 50, निफ्टी 500 एंड सेक्टर डिस्कशन विद एसडी। मैं हूं एसडी शानंदो दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। 2024 year has been a very good year in terms of commodity trading as well as stock participation, index participation. So we want also a great 2025, a rocking 2025, no matter what the overall equity market is doing. That's why multi-asset exposure मुझे लगता है is very very important, ताकि हम लोग different earning stream बनाए which are structurally divergent from each other. तो ये वीडियो में मैं देखना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट ईयर एंड तो आ चुका है कि वी हैड अ ब्यूटीफुल क्रिसमस दिस टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, आई डू नॉट डू मच ऑफ अ ट्रेडिंग। 20th, as I say, 20th almost have closed. Only stocks have bought is Tesla. So other than that, my trading has remained quiet. और मैं फिर से फ्रेश स्टार्ट करता हूं फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। तो ओवरऑल मैं देख दो, एंड ये जो वीडियो है ये मेरा कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर फर्स्ट रूल ऑफ द गेम इज यू कांट लिसन टू अदर्स एंड ट्रेड। आप किसी का सुन के ट्रेड करना बहुत ही खराब चीज होता है। दैट्स डेफिनेटली मैं कभी भी कोई भी क्लास में रिकमेंड नहीं किया कि मैं जो कर रहा हूं आप करो। सो व्हाट आई एम लुकिंग एट, बेसिकली मैं मार्केट को देखता हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ काइंड ऑफ मेरे लिए वीडियो लॉग है, और साथ में जो लोग मेरे फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप इस्तेमाल करते हैं उनको काइंड ऑफ गाइडेंस मिल जाता है। सो दिस इज बेसिकली मैं नजर रखता हूँ ओवरऑल सारे मार्केट पर। नाउ आई टेक फॉर दिए वीडियो में मैं क्लोजली वॉच करूंगा निफ्टी, निफ्टी 500 एंड सेक्टर्स को, एज वेल एज द ओवरऑल रिस्क मास्टर। सो रिस्क मास्टर हमें अप्लाई करना होता है निफ्टी एंड S&P 500 के ऊपर। रिस्क मास्टर आपको मिलेगा इनवाइट ओनली एसडी रेनबो V2 के अंडर। सो लेट्स अप्लाई V2। V2 में इसको बड़ा कर देंगे, लार्ज, एंड इंस्टेड ऑफ मदर सेटअप वी वांट द रिस्क मास्टर। सो अप्लाई द रिस्क मास्टर एंड लेट्स सी निफ्टी द ओवरऑल वीकली चार्ट इट लुक्स लाइक रिलेटिवली सेफ। हाउएवर रिसेशन रिस्क जो मैंने हाईलाइट किया बार बार कि वी आर इन रिसेशन रिस्क साइकिल, ये राइजिंग डीप मतलब वी आर गेटिंग क्लोज टू द टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट के आसपास पहुंच रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखना होगा ओवरऑल मार्केट को देखते हुए। सो इन द नियर टर्म ये जो ऊपर का 1 2 3 4, these are more volatile short term component of the risk, these are more mid term component of the risk, and these are long term cyclical risk measure करता है recession risk F1 and F2। So let's look at the risk master in the daily chart as well. Last time हम लोग देखे थे खतरनाक readings था in the daily chart, which is much better now. Overall risk has fallen. Zigzag risk in decline, but that could be due to this Santa time. Santa rally हो सकता है market में overall, but उसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करेंगे, मतलब वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, बिकॉज दिस अ लो वोलाटिलिटी, लो वॉल्यूम टाइम। और 125 मिनट में भी देखेंगे विच इज अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, मोर शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए सही चीज है वो, उसमें भी ओवरऑल रिस्क इज डाउन। एंड इसके साथ साथ इसको हम लोग अप्लाई करेंगे ऑन अमेरिकन इंडेक्स S&P 500 टू गेट अ बेटर रीडिंग। दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि टाइम फ्रेम ऑफ क्लोजिंग अलग होता है। लिटिल बिट ऑफ हायर रिस्क है, डाउन ड्रॉ डाउन रिस्क, बट नथिंग सिग्निफिकेंट। लेट्स लुक एट द डेली चार्ट, थोड़ा डेली चार्ट में भी ऑब्जर्व करेंगे। ओवरऑल रिस्क इज लो, सो यस वी कैन एक्सपेक्ट अनदर राउंड ऑफ रैली कमिंग अप, but will it be in the following up in the Nifty, or it will be an S&P US based rally, because Trump inauguration आ रहा है, वो हमें देखना हो। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं फाउंटेन ऑफ गोल्ड मेरा जो सेटअप है उसके जरिए मैं ओवरऑल मार्केट का पिक्चर समझने की कोशिश करूंगा, व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल मी। और मार्केट जो बोलता है ट्राई टू फ्लो विद द मार्केट। सो ओवरऑल ये असेसमेंट करने के लिए आई यूज द मदर सेटअप अंडर V1, और SDRSI-X भी अप्लाई करेंगे। विल गो टू निफ्टी
फर्स्ट विल स्टार्ट विद द वीकली चार्ट. सो वीकली चार्ट अगर मैं देखूं, इट्स नॉट गुड. ये वो टाइम है जो मैं बोलता हूं सबको जानना चाहिए. व्हेन नॉट टू ट्रेड, व्हेन नॉट टू कीप म्यूचुअल फंड्स, व्हेन नॉट टू बी एग्रेसिव इन द मार्केट. दिस इज द टाइम. ओवरऑल आई कैन सी 12 में से 8 मेरे फाउंटेन ऑफ गोल्ड इज अ 12 फैक्टर सेटअप. तो लेट मी मेक इट लार्ज. द राइट साइड टेबल थोड़ा बड़ा हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं 12 में से 9 फैक्टर, 9 फैक्टर जो है वो बियरिश है. 3 factor is only bullish. That is more of a long term trend, medium term trend and long term momentum. So these more longer picture is still somewhat bullish, but majority of the factor छाए जा रहा है bearishness. So अगर ये bearish है, let's understand कि what are the probabilities. Probability क्या है? तो प्रोबेबिलिटी समझने के लिए व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें क्या करना होता है, कोई भी फ्लैट एरिया जो मिलता है वहां से लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे. सो इट इज ऑल्सो कोइंसाइडिंग विद द डबल बॉटम अराउंड हियर. ये जस्ट फ्लैट लाइन बन रहा है तो इट्स ना स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड इट इज अराउंड द लेवल 714. The more stronger flat line is this one. ये भी उतना खास नहीं because it's not too long. This is another round of which is around 22,570 के आसपास. And we have the empty line approaching. Empty line is approaching around 23,000. So ये जो है, these are main levels. ये main levels हैं. So what are the probabilities exist and then हम लोग एक buyer और seller का फिर comparison कर सकते कि क्या क्या. और जैसे जैसे path follow होता है, it gives me more confidence कि this path is follow. Obviously जो लोग buy कर रहे हैं bull mode में, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए from the best case उनके लिए is like this कि वहां पे does this probability exist? Yeah, it exists. Any probabilities exist करता है. और ये एक लेवल है, सो ये लेवल से कैन बाउंस बैक. दैट्स अ पॉसिबिलिटी. साथ में ये भी पॉसिबल है कि इट बाउंस बैक. सॉरी, मैंने और एक लाइन हैव टू ड्रॉ. दैट इज द डबल टॉप हियर. डबल टॉप्स आर प्रेफर्ड. जो डबल टॉप एरिया है, ट्रिपल टॉप एरिया है, दीज आर प्रेफर्ड. सो और एक प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है. लेट्स लुक एट. इट गोज अप, कम्स डाउन, it remains range bound and then at some point it breaks higher. These are the best 2 probabilities bull के लिए. However, situation देख के जो लगता है कि market will follow the path of least resistance अगर है तो very likely it can drop, और एक probability it can remain like this and then again towards this and finally break via slanting zone. Or there is also possibility कि market comes down directly to this flat line which is around 22,500 and then goes up, takes resistance, kind of follow the same path. Yeah, it then breaks higher, takes support at the flat and then again go. Many probabilities exist at this point. अब हम लोग देखेंगे कि what are the projected probability. Projected probability for buyers at 25%. ये जो probable path on the upside, these are around 25% projected. दोनों जगह पे कि बिगर रेंज, अपर रेंज कंसोलिडेशन और लोअर रेंज कंसोलिडेशन, मतलब रेंज होने का चांस is around 43% projected. These are not actual probability, projected. And sell trade win probability ऊपर के दिख रहा है ऊपर टेबल में कि 46%. सो ओवरऑल मैं देखूं तो बियरिश रेंज मतलब सेल और कंसोलिडेशन का ज्यादा है. सो लोअर रेंज प्रोबेबिलिटी, लोअर रेंजिंग consolidation is very much possible. So overall देख के निफ्टी का जो स्ट्रक्चर वाइज हालत सही नहीं दिख रहा है. However, जो सुपर बियरिश होने से पहले कंसिडर करना होगा कि
प्रेफर्ड ट्रेड्स जो बोला जा रहा है, बाई सपोर्ट एंड सेल रेजिस्टेंस, मतलब ये सब एरिया पे बायर्स मिलना इज लाइकली. First round of buyers, this can be mutual fund buyers, this can be retail buyers or some institutional buy as well. So निफ्टी का अब हम लोग वीकली चार्ट को चले जाएंगे. विल डिलीट द ड्रॉइंग्स एंड विल गो टू द डेली चार्ट. कौन से प्रोबेबिलिटी पाथ फॉलो हो रहा है ये देख के हमें बेहतर आइडिया होता है कि व्हाट एंड डिसीजन मेकिंग में कि दिस आर द लाइकली मूवमेंट. सो ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट. और निफ्टी का डेली चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है कि ओवरऑल 12 में से 8 फैक्टर है बियरिश और सिर्फ एक फैक्टर है बुलिश और बाकी के 3 फैक्टर है न्यूट्रल. मतलब निफ्टी एक काइंड ऑफ बियरिश बायस्ड रेंज में है. प्रेफर्ड ट्रेड्स बोला जा रहा है बाय सपोर्ट एंड सेल रेजिस्टेंस. तो सिमिलरली हम लोग ड्रॉ करेंगे and we'll try to understand the probabilities. So this is a lower support line जहां पे obviously last time रुका निफ्टी and it was expected, तो हम anticipate कर पाए. अपर लेवल ये था, वो भी जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट किए थे. निफ्टी टर्न डाउन एंड नाउ यहाँ पे एक डबल बॉटम भी है. अराउंड दीज एरियाज वी हैव नाउ सपोर्ट. डबल बॉटम है यहाँ पे. Not a beautiful double bottom. अगर एकदम low point double होता then it would have been more stronger. ये जो double bottom है, it is a much weaker double bottom. अब ये लग रहा है ये नीचे का रेंज तक पहुंच नहीं पाए. Did not reach almost the range तक पहुंचा, but later on it did not reach further. Now upper side not so strong, but flat line now बन रहा है coinciding with ये जो रेड कलर का मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन आ रहा है, एम्प्टी लाइन. ये देखिए एम्प्टी लाइन आ रहा है which is also a resistance. That means around this area we have a resistance from the empty line. Let me make that dotted. Now what we are seeing, a price action दिखेगा. This is bullish, मतलब फाइट चल रहा है. प्राइस एक्शन इज न्यूट्रल, एक फाइट चल रहा है. एंड कैंडल का साइज और पोर्शन ऑफ द ग्रीन बता रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द प्राइस एक्शन का जो कंट्रोल है वो अभी भी बियर के हाथ में ही. एंड बट दिस इज अ टफ फाइट चल रहा है. मोमेंटम वाइज क्या देख पा रहे हैं, मोमेंटम का जो ग्रेजुअल अपमूव हो रहा है, एक फेडिंग चल रहा है. नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि एसटी मोमो को बुलिश में टर्न करे. नॉट इनफ. सपोज ये एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है, लेट अस सपोज, बिकॉज प्रोबेबिलिटी, देन वी कैन हैव फर्दर करेक्शन. निफ्टी रीचिंग आउट दिस पॉइंट रिमेनिंग, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट केस विल बी टू ब्रेक फ्रॉम. अगर निफ्टी ब्रेक कर पाया ये स्लैंटिंग जोन से, तब जाके ये जो अपर हायर स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है वो टूटने का चांस बहुत ज्यादा रहे. करंटली जो बायर्स है वो जो प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहेंगे लाइक दिस, बिना इवेंट का, दिस इज वेरी अनलाइकली. पॉसिबल बिकॉज हर प्रोबेबिलिटी पाथ इज पॉसिबल, बट दिस वन, द टॉप वन, लुक्स वेरी अनलाइकली. Also top probability, suppose Nifty breaks from this, then it will be unlikely. अगर ये strong flat zone से break हो रहा है, unlikely ये top zone को break कर पाए. That will bring it down again, and then we'll have to see whether it goes up or नीचे. Means there will be a big question mark. क्या होने वाला? Now also there exists path की एक slight correction हो रहा है, then Nifty has to go down further. From there it can go for the range making. And अगर ये range break नहीं कर पाए, it can go for bigger range. Obviously बाकी का जो down probability वो तो है ही, which is the worst case for the buyers.
and best case for the sellers. But with these flat lines के direct downside break looks very unlikely. But risk जो है काफी serious है. We are close to the recessionary cycle के अंदर है. Exact tipping point can't be known. But I think I have a sense कि we are getting close, especially given the way other risk factors जैसे behave कर रहा है. Now, if we consider the risk master reading, कि वो relatively safe दिखा रहा है, it is more likely it can go further up. And probability table दिखा रहा है कि चांस है 71% चांस की कंसोलिडेशन ही होगा. Or with risk master down, further correction on the upside, we cannot exclude it. Though the overall market is in the sell phase, it is clear कि selling pressure ज्यादा है. ये चीज नोट जरूर करना होगा, डिस्पाइट लॉन्ग ट्रेंड being bearish, कि सेल ट्रेड का जीतने का चांस इज अराउंड जस्ट 18%, मतलब सिग्निफिकेंटली इट हैज डिक्लाइन. सो कोई भी सेल ट्रेड के लिए हमें क्या चाहिए? मिनिमम हमें चाहिए एक प्राइस एक्शन बुलिश, सॉरी प्राइस एक्शन बियरिश सेल के लिए, पूरा रेड कैंडल. और जैसे ही रेड कैंडल होगा पूरा, वी विल बी अलर्टेड. तब जाके निफ्टी में फिर से सेलिंग का सोच सकते, क्योंकि प्रेफर्ड ट्रेड इज सेल रेजिस्टेंस. तो अगर मैं सेलिंग भी करना चाहूं, आई वांट दिस करेक्शंस टू बी डन विद. और छोटे के टाइम फ्रेम में, लेट्स नाउ रिमूव द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग्स. 125 मिनट टाइम फ्रेम विच इज मोर ऑफ शॉर्ट टर्म स्विंग, यहां पे ये कमबैक दिख रहा है. नाउ निफ्टी हैज फॉर्म्ड द बेस. एक देखिए बेस बना है, कई सारे फ्लैट लाइन से बेस बना है. एंड निफ्टी का बेस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर बायर्स विल बी, अगर इफ इट कैन समहाउ ग्रेजुअली एस्केप फ्रॉम ये स्लैंटिंग एरिया, अगर ये स्लैंटिंग एरिया से ब्रेक हो पाए, एंड देन वेरी लाइकली इट विल ब्रेक अबव 24,400. बट उससे पहले निफ्टी को सामना करना होगा दीज टफ रेजिस्टेंसेस. ये जो फ्लैट लाइन वाला, हाउ इट डील्स, मतलब कौन सा प्रोबेबिलिटी पाथ ये पकड़ेगा. लाइक इट कैन बी लाइक दिस एंड देन अगेन अ फॉल, लोग को पैनिक कराना. इट कैन देन ड्रॉप एंड से गो टू द अपर रेंज एंड देन अगेन फॉल, एंड दिस वे इट कैन रिमेन इन अ रेंज. सो और दिस इज कंप्लीट ब्रेकडाउन. जो सेलर्स है उनके लिए प्रेफर्ड होगा जब निफ्टी दिख रहा है कि इट इज ब्रेकिंग डाउन सिग्निफिकेंट, तो आपको चाहिए डेफिनेटली एक रेनबो का सेल सिग्नल. तब जाके हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे. करंटली मार्केट इज मिक्स्ड एनीवे. जब तक जनवरी हो नहीं होगा, आई विल नॉट डू एनीथिंग. So this is actually good for me. The market is so range bound because I love more trending market than range bound market. With these tight flat lines coming up, how Nifty deal with them, ये तो देखना बहुत बढ़िया रहेगा कि निफ्टी कैसे ये जो स्ट्रॉन्ग लाइंस है इनके साथ डीलिंग्स करता है. Can it break these important 900? Then we have 24,000 level. Then we have 24,200 and final 24,000. Lot of upside, strong resistance जहां पे presence of sellers होंगे. And on the buy side, we have the around 700 area. If it starts to break down and Nifty starts moving below 690, we are likely to see much bigger decline. Much bigger decline towards the previous point जो हम लोग highlight किए थे on the upper time frame. वो सारे probability will become more realistic. So ये रहे निफ्टी का डिस्कशन. करंटली अब हम लोग चले जाएंगे और एक इंडेक्स पे which is more suitable to understand the stocks. और इसको हम लोग बस डेली और वीकली टाइम फ्रेम में ही ऑब्जर्व करेंगे. दैट इज निफ्टी 500. इट इज सिमिलर टू निफ्टी. दिख रहा है कि जो लेवल्स हम लोग डिस्कस किए थे वहीं से रिवर्सल हुआ है. वी हैव ऑफ कोर्स वी हैव लोअर लेवल, ऑलवेज ड्रॉ कीजिएगा.
It was a much better double top bottom. Upper side now we have strong resistance 743. सो रेंज बाउंड होने का चांस सबसे ज्यादा है, वो भी दिखा भी रहा है 57% चांस कि रेंज बाउंड हो। अब वीकली चार्ट में चले आएंगे। लेट मी डिलीट ऑल्सो द ड्रॉइंग्स। वीकली चार्ट को अगर देखा जाए कि निफ्टी इज 500 नॉट इन अ ग्रेट प्लेस एंड इट इज गोइंग टू गेट वर्स। अगर ऐसे ही प्रोबेबिलिस्टिक पाथ फॉलो हुआ, इट इज गोइंग टू गेट वर्स। इफ इट स्टार्ट्स क्रॉसिंग below this line, say 300, and then bigger decline towards this 21,500 will be very likely. That will be much bigger decline. ऐसे sorry candle इस्तेमाल मत कीजिएगा कि line chart. If you want to use anything, you can use the line chart. So line charts, a new breakdown below 22,300 around will be a major warning that further decline will be possible, and now we can move towards 21,400 area, which is the empty line. बीच में कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं आ रहा है, एक फ्लैट लाइन छोटा आ रहा है 22,500. सो गिवन जो कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है निफ्टी का 500 एक्सेप्ट द एम्प्टी लाइन, आई एम कंसर्न्ड कि इट कैन गो फॉर अ बिगर ब्रेक डिक्लाइन एंड इट विल नॉट बी अ वेरी nice scenario for the retail, those who are holding mutual funds too much long hai broad equity. So I will not be a very aggressive I'm actually participating way less in equity. I'm very specific now into specific name of stocks. Broad market, I'm not at all bullish. I've turned bearish now. Not super bearish, but bearish because some of the factors like S&P is not down yet. So once the S&P is down, this sell-off is only going to get worse and accelerate. उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पैसा नहीं बना पाएंगे because we are multi-asset. When equities do not do well, many other asset class do well. So overall, I'm confident कि we'll do very well. So Nifty 500, I'll stay completely recommend to the rainbow users, stay out of the market as much as possible, participate in very low quantity, say 1/3 of your usual quantity, and you let this time pass. Let the bad times pass and we'll have plenty of good opportunities later on coming up. So, with that, let me have a look at the sectors, and sectors को हम लोग थोड़ा weekly chart में ही मैं observe करूंगा and weekly chart से ही देखूंगा towards the sector. This is the auto sector. After a great run, you enjoyed it. Now let it go. जाने दीजिए. जो टाइम है ना ट्रेड करने का, this can be a game changer if you want to apply the weekly chart. Cut down, should have actually cut down way before. मैं बहुत बार वार्निंग दे रहा था कि we should cut down on the, you should cut down on the, but of course किसी का सुन के तो ट्रेड नहीं करना चाहिए. आपको भी अगर लगता है ऐसा तो जरूर. I personally think, मैं ऐसा सोचूंगा कि this is not a great time. और मैं मार्केट का सुनता हूं, मेरा फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप क्लियरली बता रहा है कि this is not a great time. So I will wait for the great times to come back. So this is say commodity 12 में से 10 factor is bearish in weekly. How can we make money on the buy side? Of course, few stocks will go up, but we have to consider the risk adjusted return. This is not a bull market. Say CNFT energy sector, not a bull market at all. So when it's not a bull market, it's not a great idea to push our luck. We have to wait for the bull market to come back, and bull market, as we have seen, they will come back. And if we did not exit at the right time, then those bull market, we don't have money to put into, like Nifty Financial Services turning bad. FMCG, I'm bearish on many. If inflation goes up, commodity price goes up, this sector has a lot to lose. But this is not in a good phase. This is not in a good phase. So overall sectoral pressure मुझे दिख रहा है on the more on the downside. Look at the RSI momentum divergence.
What a momentum divergence. Also short-term momentum divergence भी दिख रहा है for the upside. Divergence देखने के लिए just change it to divergence, क्योंकि divergence base cloud से दिखता है. So ये देखिए एक cloud low बनाया, but this as it is going lower, this cloud is not making low. Either it has to go even lower, or this is a positive divergence, means more consolidation. But overall structure अगर मैं देखूं तो it's not looking at all healthy. और अगर हेल्दी सिनारियो नहीं है, इट विल बी इन योर बेस्ट इंटरेस्ट कि आप ये रिस्क को कंसिडर करें इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. So CNX IT is even coming under pressure. That's momentum loss in IT. IT has been an outlier, outperformance. So I'm confident. Just one example, one stock. Let's take one stock. Once again, not a recommendation. I'm just looking at the charts. This is, if I look at the longer term charts, Wipro had a more better risk adjusted entry points. And if Wipro breaks 320, 330, yeah, it can go even bigger. But those, once again, it's more of a specific name rather than a complete jump to the IT segment. And also, I think even in Wipro or any other participation, मैं तो low करूंगा. Though I'm not doing anything right now, except for few limited stock, but largely, if I want to participate, I'll participate by 1/3, and I'll see. I'll see what's going on further. When the bull market comes back, I'll have plenty of opportunity to make the money on the buy side. This is the CNX MNC. Not in a great phase, not in a great phase at all. Only segment जो outperform कर रहा था was actually pharma. Pharma outperformance, not यहाँ पे. If I apply the outperformance chart, then you will be able to observe probably, yeah, this is the outperformance जो दिख रहा है, it came from pharma. So pharma is definitely one segment, and pharma we can find the AI जो लोग implement कर पाएंगे, pharma will represent good opportunity. Medtech will be a new area, new opportunity. So new emerging names will be there in the AI. But overall market segment, PSC, public sector enterprise, bad. So 2025 in terms of Indian equity, हम लोग beautiful जगह पे नहीं है, and ये consider करना पड़ेगा. Just we can't be optimistic. We'll have to look at the risk. Risk is now significantly tilted ये downside की तरफ. ये realty segment, I don't know, it could be the budget coming up, it is consolidating. Realty segment going ahead can provide some up move, but overall still not a great picture, ये बोल सकते. Service sector, IT specific name is good, but overall service sector is coming under pressure. Service sector index. Let's look at the private bank. Overall range bound. दिख रहा है कि it's a range bound and bearish pressure, but if this starts breaking, it can be a long gradual move down. So some of the segment will be more bearish ranging, like this private bank or say PSU banks. Some are showing that they can do better, like pharma, and majority of the segment, I'll say they are not good. Healthcare is showing similar traction like pharma, but overall picture is not so healthy. Oil and gas is similar to energy, which we have seen a significant downside pressure in the energy segment. So overall, I'll consider they are not so good. So ये ध्यान में रख के participation कीजिए market में. All the best from my side to your trading. And as always, happy trading.